Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, welcome once again in your social science class. So, children, tell me one thing. Why our Earth is a unique planet? You have learnt about Earth. Why it is unique planet? Yes, you are thinking right. Our Earth is a unique planet because of presence of atmosphere, also water, and also presence of ozone layer. And there are some other features which Earth have. Now children, tell me how many physical elements Earth have, or how many realms or domain each element of Earth have. Okay, so children, to know the answer of these questions, let us discuss our next chapter. Children, let us discuss chapter 5, the realms of the Earth. As you already know that Earth is a unique planet because it consists of land, air and water as its major physical components or physical elements. Okay, and each element has its own realm. हर एक एलिमेंट की अपनी एक realm है, and realm means domain, और in simple terms domain means its area, its own territory. आप एक विलेज का एग्जांपल ले सकते हैं, एक सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं. सेम सच एज अ विलेज हैज़ इट्स बाउंड्री, a city has its own boundary, and same like that it can be divided into 4 realms. So children, earth को 4 realms में बांटा जा सकता है. Realm again means area. Okay, earth has 4 main domains such as the lithosphere, okay, land, then second one hydrosphere, that means water, the atmosphere, the air, and the biosphere, sphere of life. So in this chapter we shall learn about them. So children, look at here. This is lithosphere, then atmosphere, then hydrosphere, and the interaction between all these sphere is known as biosphere. Okay, then comes to bache, lithos is a Greek word which means stone or rock. As you already read about lithos, okay, so this is not tough for you. So lithos is a Greek word which means stone or rock. Okay, so जब लिथोस का मतलब भी स्टोन एंड रॉक है बच्चे, तो लिथोस्फेयर मीन्स स्फेयर ऑफ लैंड एंड रॉक्स. ओके, देन कम्स लिथोस्फेयर, द realm ऑफ लैंड, द डोमेन ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड सिंपलर टर्म्स में. ओके, द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ consisting of a thin layer of rock material is called lithosphere. जो हमारी अर्थ का बच्चे अपर सरफेस होता है, जहाँ पे रॉक मटेरियल की एक थिन लेयर होती है. ओके, इन सिंपल टर्म्स, वेयर वी लिव, वेयर वी मेक आवर हाउसेस, वेयर वी डू फार्मिंग. ओके, सो दिस अपर लेयर ऑफ अर्थ is known as lithosphere. Okay, it is found both in continents and on ocean floors. ओके, तो जो ये लेयर होती है बच्चों लिथोस्फेयर की, ये कॉन्टिनेंट्स में भी मिलती है. सो कॉन्टिनेंट्स मीन्स बिग पीसेज ऑफ लैंड ऑन दिस अर्थ. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड दीज 7 कॉन्टिनेंट्स कंसिस्ट 29% ऑफ लैंड. ओके, वेयर एज देयर इज 71% वाटर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, और बच्चे ओशन फ्लोर्स में भी लिथोस्फेयर होती है. ओशन भले ही आपको पानी से भरे हुए नज़र आते हैं, बट उनका भी एक फ्लोर होता है, ocean floor, and this ocean floor is known as lithosphere. Okay, lithosphere has divided into many areas. So first one is crust. Crust means upper layer. Okay, upper part of lithosphere. upper land, जहाँ पे आपको soil दिखाई देती है, that part is known as crust, और जहाँ पर हम चलते हैं, घर बनाते हैं. Okay, and remaining 71% part of the earth is covered by oceans. Okay, the average height of the land mass of earth is about 700 meters above the sea level. लैंड पे बच्चे किसी भी प्लेस की अगर हाइट को मेजर करना है तो उसे सी लेवल से किया जाता है. ओके, सी लेवल मीन्स हियर इज द फ्लोर ऑफ द सी और द ओशियन, एंड दिस इज फिलिंग विद वाटर. यहाँ सब जगह पानी है. सो दिस इज द
सी लेवल. ओके, सो अगर आपको इस प्लेस की हाइट पता करनी है देन वी हैव टू मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, फ्रॉम sea level, not from the land. We have to measure the floor of the ocean or the sea. Okay, for example बच्चे, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, that is considered as the highest place in the earth, having the height of 8848 meters बच्चे, and it is from sea level. Okay, so sea level से बच्चे माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा निकलती है. बट अगर लैंड मास से आप माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करेंगे तो शायद वो थोड़ा छोटा निकले. उसके कंपैरेटिवली देर आर सम अदर माउंटेन्स और हिल्स विच आर मोर हायर देन माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचे हैं. बट ड्यू टू हाइट इज़ मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल. ओके, सो सी लेवल से माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट आता है. गॉट इट? सो नाउ इज़ इट क्लियर टू यू? हाइट ऑफ एनी प्लेस इज़ मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, नॉट फ्रॉम द लैंड मास. ओके, इसकी हाइट बच्चे अब डिफरेंट बताई जाती है. अभी चाइना ने पिछले 1-2 साल में नया सर्वे कराया था. एक्चुअली नॉर्मली इट इज़ 8848 meters in all books. Okay, children, average height of the land mass of the earth is about 700 meters above the sea level. So children, जो मीन सी लेवल से किसी भी प्लेन प्लेस की हाइट होती है, नॉर्मल से प्लेस की, वो 700 मीटर तक मानी जाती है एक एवरेज सी हाइट. कोस्टल एरियाज़ की इससे भी कम हो सकती है. कोस्टल एरियाज़ ओशन और सी के साथ लगते ही हैं, सो उनकी हाइट कम भी हो सकती है. बट किसी भी प्लेन प्लेस की जो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है, सो एवरेज सी हाइट उसकी 700 मीटर्स मानी गई है सी लेवल से. द लैंड सर्फेस वेरीज इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हमने एक नॉर्मल से प्लेस की बात की कि वहाँ की एवरेज हाइट 700 मीटर्स हो सकती है. लेकिन बच्चे जो अदर लैंड सर्फेसिस हैं वो वेरी करते हैं हाइट में प्लेस टू प्लेस. सच एज जो हिल होगी उसकी हाइट तो ज़्यादा ही होगी सी लेवल से बच्चे, वेयर एज प्लेन एरिया उसकी हाइट कम होगी सी लेवल से. ओके, सो हाइट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, some parts of the earth are higher whereas some other parts are not so much higher. Okay, so बच्चे जो हिली एरिया होता है जहाँ पे हमें बड़ी बड़ी हिल्स और पीक्स मिलती हैं, so these parts of the earth are higher than, while some other parts are only a few meters above the mean sea level. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो भी हिमालयाज़ की माउंटेन्स है मोस्टली 6000 मीटर से अबव ही हैं. माउंट एवरेस्ट तो आपने पढ़ ही लिया, 8000 मीटर से अबव है. वेयर एज जो आपके कोस्टल एरियाज़ हैं साउथ इंडिया में, गोवा है, बॉम्बे को भी मान सकते हैं आप, कोस्टल एरियाज़ जो हैं उनकी हाइट बहुत ही थोड़ी होती है सी लेवल से. गॉट इट? So let's have a look at the realm of the land, lithosphere. Let's see children, this is continental crust. ये जो हमारी लैंड होती है ये थोड़ा पहले शुरू हो जाती है क्योंकि ओशंस में पहले पानी भरा रहता है. आप देख सकते हैं ये 10 किलोमीटर्स के बाद शुरू होती है यहाँ पे. ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज़्यादा थिक होती है ओशन क्रस्ट से. क्रस्ट इज़ द upper layer of lithosphere, so this is known as crust. Okay, and crust आपके 100 किलोमीटर्स तक रहती है as you can see. Okay, then there comes बच्चे plastic asthenosphere. Asthenosphere means it is the zone that separates the crust and mantle. Okay, mantle is the second layer of lithosphere. Okay, so here it is asthenosphere. Okay, and आपकी mantle layer शुरू हो जाती है. Okay, so always keep in mind that below crust there comes mantle, but it is separated by asthenosphere. Okay, then children there comes, do you know, the bottom of ocean floor is not same everywhere. It means बच्चे कि oceans बिल्कुल flat नहीं है. कहीं पे ocean floor का surface इस टाइप से है, कहीं पे ज़्यादा deep है, कहीं पे less deep है. Okay, so हर कहीं पे सेम नहीं है बॉटम आपका जो ओशन फ्लोर का है. गॉट इट? देन सेकंड बच्चे, द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑन द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, किसी भी प्लेस की हाइट को अगर मेजर करना है देन इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, नॉट फ्रॉम द लैंड मास. ओके, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल. गॉट इट? देन चिल्ड्रन देयर कम्स कॉन्टिनेंट्स, big land masses or big pieces of land on this earth. Okay,
The large continuous masses of land above the sea level are called continents. Okay, as you can see, big land masses above the sea level are called continents. So बच्चे, as you can see, continents in different colors. Also Antarctica is a continent. Okay, so landmass is divided into 7 continents, which are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica. Children, let us know more about them. So children, first of all, there comes Asia in the world map. Here there is Asia. It is the largest continent, बच्चे. Asia is the largest continent. You must know. Our India is also the part of Asia. हमारा इंडिया भी एशिया का ही पार्ट है, as you can see. साउथ एशिया में इंडिया आता है. Okay. So let us discuss about Asia. So children, as I have told you, it is the largest continent. सबसे बड़ा continent बेटे एशिया. So it comprises about 29.6% of the Earth's total land area. So children, in the north it touches the Arctic Ocean. It is the north side of Asia. So यहाँ से ये Arctic Ocean को टच करता है. Okay, which is very cold throughout the year. यहाँ पर पूरी साल बहुत ठंड रहती है बच्चे. Whereas in the extreme south, the equator passes through some parts of this continent where temperature remains high throughout the year. जबकि बच्चे इसके extreme south में equator है. Equator is the half of the world. So यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और इक्वेटर कुछ कंट्रीज से पास भी होता है एशिया के. Okay. Then it is bounded by Pacific Ocean in the east. East side में बच्चे Pacific Ocean है. As you can see, blue water. Okay. और इसके west में क्या है बच्चे? And in the west, separated from Europe by the Ural Mountains and Ural Rivers. So इसके west में बच्चे यहाँ से ये यूरोप के साथ बाउंड्री बना लेता है. ओके, और ये जो यूराल माउंटेन्स हैं ये नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं. एंड ऑल्सो हियर इज यूराल रिवर. ओके, देयर आर बिग एज वेल एज स्मॉल कंट्रीज इन एशिया. ओके, China and India are two most populous countries of Asia. So children, here there is India and this is China. Okay, and both of these countries are most populous countries. And land wise biggest country in Asia is Russia. जो रशिया है थोड़ा वो यूरोप में आता है और उसका मैक्सिमम पार्ट एशिया में आता है रशिया का. ओके, सो रशिया सबसे बड़ी कंट्री है एशिया में. एंड चिल्ड्रन, इट इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज. एशिया बच्चे स्टोर हाउस है एग्रीकल्चर का एंड मिनरल रिसोर्सेज का. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है एंड ऑल्सो मिनरल सोर्सेज भी यहाँ पे अबंडेंस में है. गॉट इट. सो चिल्ड्रन, देयर कम्स टू यू नो एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया. सो लार्जेस्ट लेक also known as Caspian Sea. It is in Asia and it lies in Eastern Europe and it is in 3 to 4 countries such as Kazakhstan, Iran and some parts of Russia. Okay, so Caspian Sea is the largest lake in the world. Okay, second one is longest wall. This is Great Wall of China और ये चाइना में है बच्चे. Then longest railway line, Trans-Siberian line. So children, trans means one end to another end. Okay, so जो Trans-Siberian railways हैं बच्चे वो रशिया के एक एंड को दूसरे एंड के साथ मिलाती हैं. Okay, so longest railway line, Trans-Siberian line. Okay, then deepest lake is Lake Baikal. It is also in Asia. Okay, then children, let us discuss about Europe. It is located to the west of Asia. ये एशिया की वेस्ट साइड में है. Here there is Asia. Then आपके इस साइड पे यूरोप है. ओके, और बीच में बच्चे आपकी जो बाउंड्री है वो यूराल माउंटेन्स की है. ओके, सो यूराल माउंटेन्स मेक अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप. ओके, यूरोप इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन एशिया. सो बच्चे यूरोप बहुत ज़्यादा स्मॉल है एशिया से and it covers only 7% of the total land mass.
सो जो 29% लैंड मास है बच्चे अर्थ का, उसमें यूरोप कवर्स 7% ऑफ टोटल लैंड मास. The Arctic Ocean lies to the north. Here you can see Europe. Okay. The Arctic Ocean lies to the north. इसके नॉर्थ में बच्चे आर्कटिक ओशन है. एंड द मेडिटेरियन सी टू द साउथ. और इसके साउथ में यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है. ओके. एंड हियर देयर लाइज मेडिटेरियन सी बच्चे. एंड द Atlantic Ocean lies to the west of the Europe. And here in the west there is Atlantic Ocean. Got it? Almost all the countries of the Europe are very advanced. Europe बच्चे बहुत ज़्यादा advanced continent है. They are economically well developed with a high standard of living. यहाँ के लोगों का standard of living बहुत ज़्यादा high है और ये financially बहुत ज़्यादा strong है. Almost all the countries of Europe are well advanced and well developed. Okay. Then comes बच्चे, do you know Asia and Africa together is known as Eurasia. This is also very important. Both Asia and Africa together is known as Eurasia. Then it is known as Eurasia. Okay. Then next, Africa was called the Dark Continent because the people of other parts didn't know much about this continent. So children, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि जो लोग हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उन्हें इस कॉन्टिनेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. रिवाइज योर टॉपिक. ओके.